Dear students, today I am going to discuss new subject political science, that is civics. In this chapter of the social science in civics, that is first one, power sharing. In power sharing we discuss about you that power sharing is very essential for in every aspect of our life, whether it is political institutions or any institution, whether it is school or colleges, universities, everywhere where it is necessary to run smoothly, especially in democratic form of government, it is very essential. Now I am going to discuss you. First of all, I explain you कि in which institution the power is shared. Number one, it is legislature. Second one, executive, and third one, judiciary. The power is shared among three organs of the government to run the democracy or democratic form of government smoothly. No one organ is in interfere situation to the other institutions. I mean to say that no organ can interfere the activities of any other institution. Every institution has well power share and they use their power in their functioning of institution. I think that you understand it, that what is power share, in how many organ of the government it is divided. मैं बता दूं आपको कि पावर शेयरिंग बहुत ही इसेंशियल है एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, स्पेशली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट के तीनों आर्गन होते हैं, तीनों अंग होते हैं, उनमें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जब तक पावर्स अच्छी तरीके से शेयर नहीं होगा तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना फंक्शन आसानी से और स्मूथली नहीं कर सकता है। इसीलिए पावर शेयर्ड किया गया है और हर इंस्टीट्यूशन इन एवरी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इसी आधार पर चलती हैं और तब वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ के जो गवर्नमेंट के थ्री इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपने अपने वर्क को करते चले जाते हैं। इन वेरी ब्रीफ आई कैन गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वेरी brief, that is what is the function of three organ of the government. The first one is legislature. The legislature frame the laws or makes the laws. On the other hand, the second organ of the government, executive, it means executive execute the laws framed by the legislature. And third one, that is judiciary. The judiciary is the organ of the government which punishes those who break the law, or no one can interfere the function of any organ of the government. If they do this one, the function of every institution can smooth run, and that is the success of institution depends upon it. Now move forward, and I am taking here in this democratic power sharing. The first one, I am going to explain you how it is shared in different organ of the government. I discuss two incidents taking Sri Lanka and Belgium. अब यहाँ पर हम दो इसी सिचुएशन को लेकर के आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये जो पावर शेयरिंग की जो अच्छी तरह से पावर शेयर नहीं किया गया दो देशों के अंदर, दैट वाज श्रीलंका एंड बेल्जियम, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू explain you very well to understand. The first one, Sri Lanka.
and on the other hand was Belgium. Let's discuss about Belgium. Belgium is a very small country in Europe. It's smaller in area and population also than state of Haryana of India. It has borders with France, Germany and Luxembourg. It has population of a little over 1 crore, half of the population of our Indian state Haryana. Now you can think that this is very small country in the compare of Sri Lanka also. That's why, for your understanding, I compare this Belgium to Haryana. That is also the very small state of India, but Belgium is very a little, or you can say that is small one than our Haryana. And now I am going to tell you the ethnic composition of this small country. It is very complex. I mean, ethnic composition was very complex. The country's total population 59% were Dutch-speaking people, lives in Flemish region of Belgium. On the other hand, 40% French-speaking people lives in Wallonia. Remaining 1% German-speaking people was there. In this, on the other hand, in the capital of Belgium, Brussels, the population distribution was very diverse. 80% people speaking French, while just 27% people speak Dutch. The minority French speaking community was very rich there. तो इस तरह के से एथनिक जो कंपोजिशन ऑफ दिस कंट्री वाज इस तरीके से था। 59% वहाँ की पॉपुलेशन डच भाषा बोलती थी, जबकि 40% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे और रिमेनिंग 1% पीपल जस्ट स्पीकिंग जर्मन. It means German was very minority in population there. अब आपको I am going to explain the ethnic complex composition, how led to the tension among the community. There was tension between Dutch speaking and French speaking people in 1950 and 1960. This tension was much in Brussels. और ये जो टेंशन था दोनों कम्युनिटी यानी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के बीच में, वो ये बिल्कुल ही डाइवर्स था पूरे कंट्री में. जहाँ डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में थे, वहीं उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर जो बेल्जियम का फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का पॉपुलेशन था वह रिवर्स था, और उसकी राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर एकदम उलट करके 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग थे. इस तरह और ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में था. ऐसी स्थिति में दोनों कम्युनिटी के बीच
काफ़ी टेंशन बढ़ता चला गया। अब लेट्स अस कंपेयर दिस टू दी श्रीलंकन इन अदर कंट्री। तो हम इसी सिचुएशन को, जो पॉपुलेशन की डाइवर्स सिचुएशन था लैंग्वेज को लेकर के, उसी तरह से लैंग्वेज बेस्ड जो टेंशन शुरू हुआ, वही बात श्रीलंका के अंदर में भी था। और श्रीलंका में भी जो लोग थे, दो लैंग्वेज बोले जाते थे, एक सिंगली भाषा और दूसरी तमिल लैंग्वेज। और इन दोनों के बीच भी इसी प्रकार से लैंग्वेज टेंशन बढ़ता चला जा रहा था। तो नाउ फॉर टुडे आई फिनिश दिस discussion, and I will see you next in next video next day. Thank you.